So, beta, we'll start with waves and superposition today. Waves and superposition. Okay. अच्छा, सबसे पहले बेटा, we need to remember the basic definition of a progressive wave. So, what is a wave or what is a general progressive wave? So, the transfer of energy through a medium is called as a progressive wave. So 1 mark की definition आती है एग्जाम में for progressive wave, transfer of energy through a medium. So this is called as a progressive waves. Okay, now next up, let's talk about the types of waves. So types of waves में हमारे पास we have a transverse wave and we also have a longitudinal wave. So this is something that you've already done in O levels as well. So the first one is a transverse wave. So transverse wave is if particles vibrate up and down or perpendicular to the wave direction, then it's called as a transverse wave. So if particles vibrate up and down or perpendicular to wave direction, so it's called as a transverse wave. So let's say, beta, आपके पास, okay, what are the examples for the transverse wave? So transverse wave में we have water waves, we have electromagnetic waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास कौन कौन सी है? GXU, VIMR, G is the gamma, X-rays, ultraviolet, visible light, infrared, microwaves, and radio waves. Or we also say waves on a rope. Okay. So सबसे पहले we just talked about कि what is a progressive wave? The transfer of energy through a medium. 1 mark की definition exam में इस पे आती है. फिर transverse wave क्या होती है? If the particles vibrate up and down or perpendicular to the wave direction, so it's called as a transverse wave. So let's say ये particle है and the particle is vibrating up and down. Yes. So these particles, they vibrate up and down and they are moving in the towards the right. So the motion of particles is perpendicular to the wave direction. Okay, so this arrowhead is basically the wave direction and the motion up and down represents the motion of particles. Next, we say waves on a rope. Okay, so basically, आपके पास the particles they vibrate up and down, and the wave is traveling in this direction. So we can clearly see that the motion of particles is up and down, and the wave is traveling to the right. So the motion is perpendicular to each other. Okay. So this is called as the transverse wave. And the examples that we have for a transverse wave, water waves and the electromagnetic waves. Okay,
So next up, let's just quickly talk about what is a longitudinal wave. So the first type that we have is a transverse wave, and the second type that we have is a longitudinal wave. So, okay, uh, we use the same definition as of the transverse wave. Up and down की जगह we write left and right, or perpendicular की जगह we use the term parallel. So what is a longitudinal wave क्या है? If particles vibrate left and right, or parallel to wave direction. So such type of wave is called as a longitudinal wave. Okay, so in a longitudinal wave, the particles move left and right, and they are still moving to the right. So the motion of particles and the motion of wave, they are parallel to each other. So such type of wave is called as a longitudinal wave. Okay, so far whatever we have discussed, this is exactly the same that you have studied in O levels as well. So सबसे पहली चीज, what is a wave? The transfer of energy through a medium. ठीक है? Now what is a medium? Medium can be a solid, liquid or a gas. अब हमारे around air है. If I am talking, it means I am producing sound energy. Now those air molecules, they absorb the sound energy, they vibrate left and right, and they transfer the energy from me towards you. Okay? So this is actually a wave. Or what is the example for a longitudinal wave? So the example of a longitudinal wave is sound waves or waves on a spring. Okay, so the two examples for a longitudinal wave, we have sound waves or waves on a spring. Okay, so generally वो 2 mark का आपसे difference भी पूछता है एग्जाम में कि state the difference between transverse and longitudinal wave. तो transverse में particles जो है they vibrate up and down and their motion is perpendicular to wave direction. Longitudinal में particles vibrate left and right and their motion is wave direction. Okay, now let's just quickly talk about, okay, so ये हमारे पास, we have a spring. So okay, so we have a spring, और spring के अंदर we have a series of compression and rarefaction. Compression क्या होता है? Compression is a dense region in which particles are closely packed. ठीक है? So compression में particles जो है वो बहुत ज्यादा close होते हैं, जिसकी वजह से वो dense होता है. Rarefaction में particles are far apart, a little far from each other, and it's a less dense region. So one mark की compression या rarefaction पे भी definition वो पूछ लेता है. बाकी the distance between two consecutive compression gives us one wavelength, or the distance between two consecutive rarefaction is also equal to a single wavelength. So we'll talk about the basic terms of waves after this. So for now, the distance between two consecutive compression gives us a single wavelength, and similarly, the distance between two consecutive rarefaction also gives us the
wavelength. Now, what is compression? Dense region in which particles are closely packed. Dense region in which particles are closely packed. Okay. Now, what is a rarefaction? Walaikum assalam, beta. So, rarefaction is basically a less dense region in which particles are far apart. Less dense region in which particles are far apart. Okay. Any questions? Any queries in this so far? Okay. So generally, what is a progressive wave? Wave होता है the transfer of energy through a medium. Medium में solid, liquid या फिर gases. ठीक है? So space के अंदर we have vacuum, right? तभी अगर space में कोई explosion होता है तो we can't hear it because there's no medium for the sound energy to be transferred from one planet towards our planet. Okay? So medium is basically a solid, liquid, or a gas. Okay, now we have two different types of waves, a transverse wave and a longitudinal wave. Transverse wave में particles जो है, they are vibrating up and down and their motion is perpendicular to the wave direction. Longitudinal wave में particles जो है, they move left and right and their motion is parallel to the wave direction. ठीक है? Okay. Transverse wave की example में we have electromagnetic waves. Longitudinal में we have sound waves. Compression क्या होता है? A region, it's a dense region in which particles are very close together, or rarefaction is a region in which it's a less dense region in which particles are apart from each other. Okay. Any questions? Any queries in this so far? Okay. Now let's just talk about the basic terms of a wave and the two different types of waves जो हम लोग encounter करते हैं. So एक displacement time graph होता था and the other one used to be a displacement distance graph. So let's just talk about that. So let's talk about the displacement time graph, and on the other hand, we have a displacement distance graph. ये O levels वाला है. ठीक है? Okay. Okay, so displacement को यहाँ पे भी represented with y और time आपके पास, let's say time is given in milliseconds maybe. ठीक है? And on the other hand, we have another graph and that is a displacement distance graph. Okay, so we have y in meter and x is given in centimeter. ठीक है? So we have two different graphs. एक हमारे पास displacement time graph है and the other one is a displacement distance graph. So सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है amplitude of a wave. So वालेकुम अस्सलाम बेटा. Amplitude of a wave. So what is amplitude of a wave? Maximum displacement above or below the mean level. ठीक है?
सो 1 मार्क की डेफिनेशन अगर एम्पलीट्यूड पे आती है, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट above or below mean level. Okay, so let's just mark the diagram now. ठीक है, so diagram में बेटा आपके पास ये जो x axis है, that is your mean level. ठीक है, but it's not necessary कि हर दफा आपका जो mean level है वो x axis ही हो. So basically अगर आपके पास कोई एक random में अगर एक wave देता हूं, ठीक है, और आपके पास ये वेव है, लेट्स से ये, तो इस केस में एक्स एक्सिस उसका मीन लेवल नहीं है, उसका जो पीक पॉइंट है इसके जो दरमियान वाली सेंटर वाली लाइन होगी, दिस सेंटर लाइन इज गोइंग टू बी द मीन लेवल. ठीक है, सो मीन लेवल क्या होता है कि उसके क्रस्ट और जो ट्रफ है उसको जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर वाली जो लाइन होती है, दैट इज द मीन लेवल. Now, amplitude is what? Amplitude is the maximum displacement above or below the mean level. तो mean level ये है, तो यहां से लेके यहां तक लेट्स से ये 10 है. सो आपके पास सलाम बेटा. ओके, सो ये आपके पास व्हाट इज द एम्पलीट्यूड फॉर द फर्स्ट ग्राफ? Amplitude is 10 meter, right? So this is the amplitude. ये आपके पास amplitude है. ठीक है, so we neglect the negative sign because amplitude is a scalar quantity ना, तो हमें उसके साथ माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं. It's just a magnitude of the length. ठीक है, okay. Now similarly, if I ask you okay, what is the amplitude in the second graph? So it's going to be 20 meter. 20 meters. Amplitude है ना? So amplitude is in meters. So what is the amplitude? ये जो arrows yellow है, these arrows are basically the amplitude. ठीक है, और let's say अगर मैं आपसे इसके बारे में अगर कहता कि ये 5, 10 और ये 15 है, so what is the amplitude in this case? So the amplitude would be 5 meter because mean level ये है और maximum point ये है, इसके दरमियान का distance आपका 5 meters बनता है. So we can say कि the amplitude is 5 meter. Okay? So ये पहली चीज हमारे पास हो गई. अच्छा, so amplitude के बाद let's just talk about crust. Crust क्या होता है? Maximum point above the mean level. ठीक है, now let's talk about the crust. Crust होता है, so crust is maximum point above the mean level. Trough होता है maximum point below the mean level. So crust or trough. Maximum point above mean level or trough is maximum point below mean level. ठीक है, okay. So now we denote the crust with what? So crust के लिए हमारे पास बेटा ये वाला जो पॉइंट है जो आपका मैक्सिमम ऊपर है, ये हमारे पास crust है, और जो ये पॉइंट जो नीचे की तरफ है, दिस पॉइंट इज योर ट्रफ. सो मैक्सिमम पॉइंट अबव, क्योंकि वेव का मैक्सिमम पॉइंट यही बनता है, इससे ऊपर वेव इज नॉट एग्जिस्टिंग. ठीक है, और ये आपके पास ट्रफ है. ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द time period. So what is the time period? Time period is the time required to complete one cycle of a
wave. So what is a time period? Time period is the time required to complete one cycle of a wave. So time period है time needed to complete one cycle of a wave. One cycle of a wave. ठीक है? So again, time period की भी generally वो आपसे पूछ लेते हैं 1 mark की definition. Okay, so time period, time needed to complete one cycle of a wave, or the time between two consecutive crusts or two consecutive troughs of a wave. So time, या तो मैं ये लिख सकता हूं time needed to complete one cycle of a wave, या time taken between two consecutive troughs or two consecutive troughs. Okay, so time period is the time taken between two consecutive troughs or the two consecutive troughs. So अच्छा, अब time period सिर्फ displacement time ग्राफ से निकलेगा, जो displacement distance ग्राफ है उससे हमें wavelength पता लगती है. ठीक है? So this is the difference between these two. Okay, so time period is the time taken between two consecutive crust वाला ले लो, या दो consecutive troughs के दरमियान कितना टाइम लग रहा है वो, और in general this is one complete cycle of a wave. So this is actually your time period. So let's say अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि this is 10, 20, 30, 40 and this is 50. So what is the time period of this wave? इस वेव का कितना होगा टाइम पीरियड? 20 milliseconds. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मिली में दिया हुआ है. सो द टाइम पीरियड फॉर दिस वेव इज 20 milliseconds. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, सो या तो आप क्रस्ट से क्रस्ट तक का टाइम देख लो, 10 से 30 कितना बनता है, 5 से लेके 25 तक है वो, तो 25 माइनस 5 करूं 20 milliseconds ही बनता है. या दो ट्रफ्स के दरमियान देख लो, 15 से लेके 35 माइनस करो 35 माइनस 15, यू स्टिल गेट 20 milliseconds. या हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे, दैट मेक्स वन होल साइकिल, उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज आल्सो 20 milliseconds. So this is how we figure out the time period of a wave. Is it clear? Okay. So ये हमारे पास time taken between two consecutive crusts or two consecutive troughs, or the time needed to complete one cycle of a wave. This is what the displacement time graph gives us. Okay, now let's just talk about the frequency. Now what is frequency? Frequency is the number of cycles per unit time. Frequency हमें number of cycles per unit time. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूलाज होते हैं. वन इज अ जनरल फॉर्मूला बेस्ड ऑन इट्स डेफिनेशन, नंबर ऑफ साइकिल्स ओवर टाइम, और we use another formula, f is equals to 1 over t. ठीक है, what is the SI unit of frequency? SI unit of frequency is hertz. और अगर मैं हर्ट्ज को बेस यूनिट्स की टर्म में लिखूं तो मैं इसे पर सेकंड भी लिख सकता हूं, क्योंकि टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स, तो 1 over s, s ऊपर जाके उसकी पावर -1. ठीक है, सो दिस इज द बेस यूनिट.
So ये SI यूनिट है और SI यूनिट in terms of its base unit is per second. Acha, so once you have calculated the time period था 20 milliseconds, right? तो अब अगर मुझे frequency निकालनी है तो बेटा I just have to use the formula 1/20 milliseconds है. मिली का मतलब होता है we have to multiply it with 10 की power -3. So we multiply it with 10 की power -3, 1000/20, it's 100/2, which is 50 hertz. Okay, is it clear everybody? ठीक है. Okay, so far अभी तक हम जितना देख रहे हैं we are already familiar with that. We have done that in O levels as well. Okay, now let's just talk about, so okay, is it clear? Frequency, ठीक है. Frequency के बाद next we have wavelength. So what is the wavelength? How do we define wavelength? The distance between two consecutive crusts or two consecutive troughs. Okay, so what is wavelength? Distance between two consecutive crusts or two consecutive troughs. Okay, I hope it's clear to everyone. So wavelength is distance consecutive troughs. Okay, so wavelength हमें ये बताती है कि distance between the two consecutive crust or two consecutive troughs. ये हमारे पास wavelength है. अब मैंने आपसे कहा जो displacement time graph होता है that gives us the time period. जो displacement distance graph है उससे हमें क्या पता लगता है? We get the wavelength. ठीक है. Now what is the symbol for the wavelength? So this is the lambda that we use for the wavelength. Okay, now let's just again look at this diagram. So हमारे पास दो crust के दरमियान जो distance है that is the wavelength of one single wave. So let's say ये 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 and 20. ठीक है. So let's say अब मैं आपसे पूछता हूं कि what is the wavelength? So wavelength कितनी है? So wavelength is going to be 10 centimeter. ठीक है. क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक. तो ये क्रस्ट है 2.5 पे, ये वाला है 12.5 पे. तो 12.5 minus 2.5 करूं, so the wavelength is 10 centimeters. ठीक है. So let's say if you're using the answer to a previous part और ये सेंटीमीटर में है तो we have to convert it into meters. ठीक है. So अगर उसने आंसर आपसे ये कहा हुआ है कि give the answer in meters, so we'll simply divide 10 by 100 and we get 0.1 meter. So displacement time graph से you find out the time period. From the displacement distance graph you calculate its wavelength. Is it clear? ठीक है. एम्पलीट्यूड हमारे पास मीन लेवल से लेके मैक्सिमम टॉप तक का जो ये डिस्टेंस है दिस इज द एम्पलीट्यूड. क्रस्ट से क्रस्ट तक का दिस इज द टाइम पीरियड या एक पूरे साइकिल का दिस इज योर टाइम पीरियड. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम. फिर हमारे पास जो वेवलेंथ है इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट or two consecutive troughs. Clear? Okay, now let's talk about wave speed. So wave speed, अच्छा, अब हमारे पास
वेव स्पीड क्या होती है? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम. जैसे नॉर्मल स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेव स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम. सो डिस्टेंस traveled by a wave per unit time. ठीक है? Okay, so wave speed को we denoted with v, so v can be lambda over capital T. So where v is the wave speed, lambda is the wavelength, capital T is the time period, wavelength is in meters, wave speed is going to be in meter per second, and capital T, which is your time period is in seconds. ठीक है? अच्छा, we have another formula, v is equals to f lambda. ठीक है? So where f is your frequency. So frequency is going to be in hertz. अच्छा, there's one note that you need to remember, and that is all electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास जो 7 वेव्स है, G, X, U, V, I, M, R, they all travel at the speed of light. Okay, so let's just write this about the electromagnetic waves. अच्छा, is it clear कि what is a wave speed? ये दो formulas है, V is equals to lambda over T, V equals to F lambda. Okay, and the note is कि electromagnetic waves मतलब कि G, X, U, V, I, M, R travel at speed of light. Okay, so let's just go back from where we just started. Acha, so we were just talking about, okay, so we have the wavelength. अब बेटा let's say एक में आपको वो ये कह देता है कि दिस ग्राफ इज फॉर अ, ये माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव का ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ इज फॉर द इंफ्रारेड. ठीक है? अगर ये माइक्रोवेव का है और ये इंफ्रारेड वेव है, तो हमें इससे ये पता लगता है कि इनकी स्पीड कितनी होगी? 3 into 10 raised to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. तो पहले केस में हमें टाइम पीरियड पता है. ठीक है, वी नो द वेव स्पीड. कैन वी कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द फर्स्ट वन? ठीक है, हमें टाइम पीरियड पता है. वी ऑल्सो नो द वेव स्पीड विच इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, सो वी यूज द फॉर्मूला v is equals to lambda over t, और ये t उधर जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो v की जगह आई विल राइट 3 into 10 की पावर 8, टाइम पीरियड की जगह 20 into 10 की पावर -3. ठीक है? सो इसको आप सॉल्व कर लोगे, सो यू विल गेट द वेवलेंथ. ओके, लेट्स से दूसरी जो वेव है वो कहते हैं ये रेडियो वेव का ग्राफ है. अगेन अगर ये रेडियो वेव है, सो दैट मीन्स कि वी नो द स्पीड. स्पीड कितनी होगी इसकी? 3 times 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मुझे इसकी भी स्पीड पता है, and let's say if he asked me to calculate the frequency of the wave or maybe the time period, ठीक है? So I can use the formula v equals to f lambda, और f को सब्जेक्ट बनाता हूं, v over lambda equals to f. The speed of the wave is going to be 3 into 10 की power 8 and the wavelength is 0.1 meter. So we put the value in the calculator and we'll get the answer
3 times 10 to the power of 9 hertz or per second. So once you have the frequency, you can also calculate the time period. T is equals to 1 over f. तो 1 over 3 to 10 की पावर 9 करोगे, so यहाँ से आपके पास frequency भी निकल आएगी. Okay? Is it clear everyone? ठीक है? Okay. So far अभी तक ये जितना हमने किया, this is all relevant to the O levels. अब एक और मैं आप लोगों को बताऊंगा फेज डिफरेंस के बारे में, which is something new for you, ये and that is in the A levels. So generally, what is a wave? The transfer of energy through a medium. Difference between transverse and longitudinal wave. Transverse wave में particles जो है, they vibrate up and down and perpendicular to the wave direction. Example में water waves, electromagnetic waves. You can look at the diagram कि particles up and down move करते हुए right की तरफ जा रहे हैं. Okay, so longitudinal में particles vibrate left and right and parallel to the wave direction. Compression होता है dense region जहाँ पे particles closely packed हैं. Rarefaction is a less dense region where particles are apart from each other. Okay, next up हमारे पास दो तरह के graphs होंगे. एक displacement time graph and the other one is a displacement distance graph. Displacement time graph से we can find out the time period. ठीक है? और displacement distance graph से we will find out the wavelength. सबसे पहले what is an amplitude? Maximum displacement above the mean level. यहां से लेके यहां तक ये amplitude हो सकता है या ये. ठीक है? Amplitude is 10 meters. Okay. Crust क्या होता है? Maximum point above your mean level. तो ये crust है, ये crust है, ये crust है. This is a trough. ठीक है? Time period होता है time between two consecutive crust. So दो crust के दरमियान कितना टाइम लगता है और एक कंप्लीट साइकिल को कितना टाइम पीरियड लगता है, दैट इज योर वन टाइम पीरियड. नाउ व्हाट इज क्या कहते हैं वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. सो दिस इज योर वन सिंगल वेवलेंथ फॉर अ कंप्लीट वेव. वेव स्पीड का फॉर्मूला v equals to lambda over t और v is equals to f lambda. ठीक है? और अगर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट कोई भी दी होती है तो उसका हमें ये पता होना चाहिए कि दे ऑल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 times 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें मैंने वेवलेंथ निकालनी भी थी और मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. I use the formula v equals to f lambda, make f as the subject. First, f equals to v over lambda. V over lambda की value, you got the frequency. उसमें time period पता है, which is in milliseconds. Please, मैं बार-बार कह रहा हूँ, graph में you have to be careful. In questions में centimeter में दिया होगा, अगर waves आपको wavelength, so you have to convert it into meters. अगर टाइम पीरियड मिली सेकेंड्स या माइक्रो में दिया हुआ है तो मिली के लिए मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -3 और माइक्रो मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर ऑफ -6. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है? अच्छा, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बिफोर वी टॉक अबाउट द फेज एंगल डिफरेंस. व्हाट इज द फेज? फेज क्या होता है जी? फेज, जनरली फेज तो आप लोगों ने पढ़ा है ना. दोनों पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. Okay. जब दोनों पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. Okay, yes. Phase is basically the displacement and direction of a particle at a particular point. ठीक है? अब देखो मेरे पास मैं दोबारा बोलता हूँ, ये वेव है. ठीक है? अब देखो मैंने बोला the displacement and the direction of a particle at a specific position is called as the phase. अब ये पूरी वेव है. ठीक है? अब इस पूरी वेव में
ये एक अलग डिफरेंट स्पेसिफिक पॉइंट है। इस पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मतलब कि इसकी हाइट कितनी है और इसकी डायरेक्शन किधर है, क्या ये ऊपर है या क्या ये नीचे है। दिस इज कॉल्ड एज द फेस। ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट और and the direction of a wave at a particular point on a wave is called as the phase. ठीक है, अब हमारे पास बड़ा फ्रिक्वेंटली आता है क्वेश्चन किसके ऊपर, we have to find out the phase angle difference between two different waves. So we'll talk about that now. Okay, so let's just write the definition for phase. कि phase क्या होता है. So the displacement and direction of particle on a wave at certain point, at specific okay जी. इज इट क्लियर एवरीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ लो अभी. ठीक है, अच्छा. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दी. ओके देखो बेटा, लेट्स से आपके पास ये एक, लेट मी ड्रॉ अनदर वेव. ये एक वेव है और मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, वो इस पॉइंट पे है. ठीक है, मैंने ये पॉइंट मार्क किया हुआ है. इस पॉइंट पे ये 5, वी हैव इट्स अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है, और आपके पास ये उसने दिया हुआ है. तो अगर मैं आपसे जनरली फेस को वी रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल. ठीक है, सो फेस हमारे पास क्या है, इसका कितना एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे 5 मीटर है. ठीक है, सो नहीं नहीं इस पॉइंट की बात हो रही है. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द फेज एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ग्राफ से आप रीड करते हो, तो वो 5 मीटर है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द फेज एट पॉइंट ए, तो फेज का मतलब ये है कि उसका 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, सो द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स. सो अपवर्ड्स इसकी direction. So this is actually what the phase means. Okay, now what is phase difference? Phase difference is the phase angle difference between two waves. Okay, so phase difference क्या होता है? Phase difference is the phase angle difference between two waves. ठीक है, अच्छा. अभी हमारे पास लेट्स से दो डिफरेंट तरह की वेव्स हैं और इन दो डिफरेंट तरह की वेव्स के दरमियान वी वांट टू फिगर आउट द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट वेव्स. ओके, नाउ लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है. ओके ओके, सो लेट्स से ये है. अब मेरे पास एक ये वेव है
ओके, सो ये मेरे पास ये टाइम है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। ओके, सो दिस इज वेव वन, और मेरे पास एक वेव और है विद अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। आई होप वो कर लिया था आपने। ओके, सो लेट्स से बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है ना क्वेश्चंस वगैरह वो पूछता होता है, ठीक है। ओके, ओके, नाउ since we are talking about the since we are talking about the phase angle, ठीक है, अब हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे। नाउ दिस इज योर वेव टू, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मार्क द टाइम ऑन दिस। सो टाइम हमारे पास लेट्स से ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड दिस इज 40, ठीक है। ये हमारे पास ये है। Okay, now we have two different formulas to calculate the phase angle difference. So to calculate the phase angle difference, we can either use 2 pi small t over capital T, ठीक है। स्मॉल t क्या होगा? स्मॉल t is the time between two consecutive time between crust of wave 1 and crust of wave 2, ठीक है। t क्या है? टाइम बिटवीन crust of two waves, ठीक है। सो टाइम बिटवीन crust of two waves, कैपिटल T क्या है? कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। सो ये दो वेव्स हैं, इन दोनों का, अच्छा, आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर वेव वन का टाइम पीरियड कितना है? वेव वन का टाइम पीरियड कितना है? 20 milliseconds. And what is the time period for the wave 2? उसका भी 20, ठीक है। So T is basically the time period of wave. It can be time period of either wave 1 or wave 2, ठीक है। वैसे जब हम फेज एंगल डिफरेंस ले रहे होते हैं तब हमारे पास जो टाइम पीरियड दोनों वेव्स का होता है इट इज सेम, ठीक है। इट नीड्स टू बी सेम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फेज एंगल डिफरेंस। सो स्मॉल t is the time between two consecutive crust, or two time between crust of two waves, or and capital T is the time period of the wave. Okay, so the time period is this, ये हमारे पास टाइम पीरियड है कैपिटल टी। सो कैपिटल टी मेरे पास आ गया है 20 मिली सेकेंड्स। स्मॉल टी है दो दो क्रस्ट के दरमियान, या दो ट्रफ्स भी कह सकता हूं, ठीक है। आई कैन आइदर यूज के, अच्छा, वेव वन का क्रस्ट किधर है? वेव वन का क्रस्ट इधर है, ठीक है, और ये क्रस्ट इसका है। अच्छा, वेयर इज द क्रस्ट ऑफ वेव टू? वेव टू का क्रस्ट किधर है? यहां पे। सो हमने कहा है ये हमारे पास स्मॉल टी है। अच्छा, मजे की बात ये है, ठीक है, कि जो फेज एंगल डिफरेंस है
वो डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है, दो वैल्यूज होंगी। जब आप बैक पे आंसर्स चेक करोगे ना तो आपको उसमें दो ऑप्शंस दी होती है। मैंने इधर लिखा है ना 2 ml, या तो ये वेव 1 का क्रस्ट है, ये वेव 2 का क्रस्ट है, इनके दरमियान कितना टाइम लग रहा है, या तो ये स्मॉल टी ले सकते हैं या फिर ट्रफ टू ट्रफ। वेव 2 का ट्रफ ये है, वेव 1 का ट्रफ ये है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का आई कैन ऑल्सो कंसिडर दिस टू बी स्मॉल टी। ठीक है, और वैसे ये क्रस्ट टू क्रस्ट में ये वाला भी पॉइंट हमारे पास वैसे जा रहा है। खैर, if I consider this, let's use these values. Small t की value I can either consider the value of small t. Small t कितना बनता है 10 minus 5, it is 5 milliseconds, or I can also use small t as 15 milliseconds. Now let's just calculate the phase angle difference using the formula 2 pi small t. ठीक है, अगर वो मिली मिली वैसे ही कट जाएगा, but it's fine. For a practice purpose, you still write 10 की power minus 3 instead of milli. ठीक है, so ये cancelled out. Or if I use 2 pi times 15 milliseconds, ठीक है, over 20 milliseconds. So milli वैसे ही कट जाएगा. Can you just tell me okay, what is the answer that we get? 5 times 4, it's going to be pi over 2 radians. ठीक है, so phase angle difference जो हम calculate करेंगे, we'll be using the SI unit radians हम यूज करेंगे. रेडियंस पढ़ा आप लोगों ने, सर्कुलर मेजर मैथ्स में पढ़ा होगा ना. ठीक है, सो एक जैसे डिग्रीज होता है तो डिग्रीज से हमारे पास रेडियंस में भी होता है. ठीक हो गया जी. स्मॉल टी डिफरेंट क्यों है? अच्छा, स्मॉल टी अगर आप उसको क्रस्ट से क्रस्ट के लिए हुआ है, Are you serious? Huh? Happy birthday. चलो ठीक है, it's fine. जी, यहाँ तक क्लियर है आप दोनों को भी? ओके ओके, सो 5 3, okay, so it's going to be 3 pi over 2 radians. ठीक है, we have to complete the syllabus जितना जल्दी करेंगे ताकि we can do some revisions as well. हाँ, टाइम डिफरेंट इसलिए है, अगर मैं इसको क्रस्ट टू क्रस्ट के लिए देखूं, ठीक है, सो अगर मैं यहां से ये वाला देखूं तो ये 5 मिलीसेकंड्स बनता है. अगर मैं वेव 2 से आगे देखता और ये इसलिए वेरी कर सकता है कि आपका हो सकता है कि वेव 1 पहले स्टार्ट हुई हो, वेव 2 बाद में हुई हो, जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक दे दोगे, he'll give you the mark for that. ठीक है, तो इसके पीछे दो आंसर दिए होंगे. यस, लेकिन ऐसे एंगल डिफरेंस है कि नहीं, हम तो दोनों टी यूज करके उसका डिफरेंस नहीं निकाल. नहीं, आपके पास देखो ना, फेज एंगल डिफरेंस इज pi over 2 radians और द फेज एंगल डिफरेंस इज 3 pi over 2 radians. मतलब 3 मिलीसेकंड से 3 pi over 2 और 5 मिलीसेकंड से pi over 2. हाँ, तो असर डिफरेंस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. नहीं, दिस इज एक्चुअली द फेज एंगल डिफरेंस जो ओवरऑल को कैलकुलेट करके हमें देगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट, आप अगर इसको डिफरेंस के तौर पे तो यू कैन कॉल इट कि ये डेल्टा, ऑलरेडी इट गिव्स यू द चेंज. ठीक है, ओके, वी हैव अनदर फॉर्मूला. अच्छा, ओके ओके, सो वी हैव अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट. उनकी अभी नहीं क्लास होती. अच्छा, खैर, ओके, डेल्टा फाई equals to 2 pi x over lambda. That, so we have another formula. अब एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए है, दूसरा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के लिए है. स्मॉल एक्स हमें क्या देता है? स्मॉल एक्स हमें ये बताता है
distance between two two crust or troughs of a wave, or lambda is the wavelength of one wave. And in order to calculate the phase angle difference, it is necessary that the time period or the wavelength of both waves should be equal. Okay? Otherwise, देखो, we can't use this formula otherwise. Okay, so x is distance. Yes. Distance between. उसकी तो वीडियो मैंने शेयर की भी है. ये वाला मैंने किया हुआ है, मैं बाकियों की भेज दूंगा इंशाल्लाह. वो तुम लोगों के साथ मिलके होगा. अल्लाह रहम करे. अच्छा, okay, I hope it's clear now. Okay, how we're supposed to use this formula. Okay, so I'm going to draw another one. Or iska, please just calculate its Sure. 5. He's right. 5. Ahmed. Achha, listen. Okay. Sir? तुम जाके तो देखो. Okay, so we have, this is the wave 2. Wave 2 मैंने solid lines के साथ भी मतलब की है, dotted lines के साथ रखी है, and the other one is your wave. This is the wave 1. ठीक है. Now let's say ये 3, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and we have 27. Okay, so we have क्या कहते हैं? It's a displacement distance graph. Please find out the phase angle difference between these two waves. Okay. आप लोगों को I'll just share the link again with both. इनकी एंड हो रही है, तुम लोगों की नहीं हो रही. ओके, प्लीज इन द मीनवाइल जब तक वो हो रहा है, आप लोग प्लीज मुझे इसका बताओ कि व्हाट इज द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स. प्लीज गो अहेड. सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? मतलब सॉरी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव? ओके, वो फ्रान किधर गया है? पता नहीं, और को जहन को भेजनी थी. सॉरी, उसको सोने दो. ओके, एनीहाउ जी.
ओके बेटा प्लीज प्लीज इसको जल्दी से करो यार. ओके Anas. अच्छा, so we have the wave 1 and we have the wave 2. Now please calculate the phase angle difference between the waves. Okay, so pi radians आ रहे हैं. एक ही आ रहा है कि कुछ दो डिफरेंट आ सकते हैं. ठीक है, ट्राई करके देख लो अगर आपके पास एक ही बनता है या फिर दोनों केसेस में सेम आएगा वैसे. सो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल x एंड यू आल्सो नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा. तो इस केस में वेवलेंथ कितनी है? सो वेवलेंथ इज 12 यार, crust to crust. This is the wavelength. So this is 12 centimeter. And what is the small x? So small x is ye trough hai of wave 2, wave 1, and this is the trough of wave 2. So this is going to be small x. So we use the formula for delta phi, which is 2 pi. Small x की value is 6 over what is the lambda, that is 12. 6 2s are 2 pi radians. क्या ले लिया ना? x एक ही है. x होते हैं दोनों वेव्स के दरमियान. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. जी सॉरी, वो 0.06 ओवर 0.12 करोगे ना तो वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या नहीं, x is in centimeter, so wavelength will also be in centimeter ना. दोनों ही सेंटीमीटर है. ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट. सो वी आर नॉट यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट, हम सिर्फ डिस्टेंस यूज कर रहे हैं ना. हमने ये देखो, हमने हॉरिजॉन्टल ये ली है लैम्डा and we have taken the value of x as this. जी, is it clear everybody? Any confusion? Okay, now let's just start with the next, that is the intensity. जल्दी से. Okay, so ये हमारे पास. Okay, so this is how we calculate the phase angle difference between the two different waves. ये आज अभी मैं अब आप लोगों को इंटेंसिटी वाला करवाऊंगा. Then we will discuss क्या electromagnetic waves वाला. ठीक है, and that would mark the end of the section of the waves. क्योंकि आपका जो A levels का syllabus है उसमें division है वेव्स और सुपरपोजिशन को उसने सेपरेटली किया हुआ. ठीक है, तो सुपरपोजिशन और वेव्स मतलब ये सारा कलेक्टिवली एक ही है. ओके, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज. सॉरी जी, नहीं नहीं, थर्मल फिजिक्स जो है नहीं, वो A2 में जाके आएगी. एस्ट्रोनॉमी भी उधर ही है, न्यूक्लियर है, पार्टिकल फिजिक्स है. Okay, now what is, okay, listen, now let's just quickly talk about, okay, what is the intensity of a wave. Intensity होती है power intercepted per unit area. वली फसी क्या हुआ, कौन सा ये वाला? अच्छा देखो बेटा, दो क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का टाइम देख सकते हो, वेव 1 से वेव 2 तक का.
या फिर आप ट्रफ से लेके ट्रफ तक का टाइम देख सकते हो। ठीक है, आपके पास दिस इज योर वेव 1 एंड द रेड वन इज द वेव 2। इसका क्रस्ट ये है और इसका क्रस्ट ये है। सो क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक का जो टाइम है दैट इज 5 मिलीसेकंड्स। ट्रफ टू ट्रफ देख रहे हैं, वेव 2 का ट्रफ ये है, वेव 1 का ट्रफ किधर है? ठीक है, वेव 1 का ट्रफ ये है 15 पे। तो ट्रफ टू ट्रफ इसका कितना बनता है? 15 मिली सेकेंड्स। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है? ये कंप्लीट साइकिल की वेवलेंथ है 20। सो फॉर्मूला 2 पाई स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। स्मॉल टी इज 5 मिली सेकेंड्स, कैपिटल टी इज 20। सो अब आप इसको डिवाइड कर लो। सो वी गेट द फेज एंगल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाई एंड इन रेडियंस। नो, उसके बाद नो वापस अनस से वापस से नाम भेजे। अच्छा सर अब अनस कहेगा तो फिर भेज। सर मेरा ब्लैडर बहुत ओके ओके, सो 2 पाई x ओवर ये 2 पाई स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। अब आपने 15 ओवर 20 यूज कर लेना है। सो यू गेट द वैल्यू। क्या चीज लिखा हो? वो आपसे ये पूछेगा, आपसे इंडिविजुअली फेस के बारे में नहीं पूछता। वो आपसे अगर क्वेश्चन आता भी है ना तो वो फेस एंगल डिफरेंस के बारे में ही पूछेगा। ओके, we'll take 5 minutes break, but you can't go out of the class. You have to stay in the class, and फिर उसके बाद we'll start again. But sorry जी।